Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss question and answer of the portrait of a lady. ओके आम आगुरी पूरा एक्सप्लेनेशन सारीचे यूनिट वाइज यूनिट से गुड़ाक देखी दियो तले लिंक दे देइछि ता साथे हमर सब लेसन भी सरीछि विथ राइटिंग स्किल भी सरीछि एसे भी सरीछि सब सरीछि तले दे देबी प्लेलिस्ट से गुड़ाक देखी दियो जो द्वारा कि तुम एग्जाम रे बहुत भल मार्क रहिबो ओके द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी होछि सीएचएससी रो गोटे माने फेवरेट टॉपिक कहले चले बहुत टाइम आर क्वेश्चन आसीछि को इयर्स रे को क्वेश्चन आसीछि सेडा भी मैं मेंशन कर देइछि तुम माने पढ़ी दियो आ पढ़ी के प्रैक्टिस भी करो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख why was it is hard to believe that his grandmother was once young and pretty तो कौन पे राइटर को हार्ड टू बिलीव होता बिलीव कर पार नथिले जे ताको ग्रांडमा थोड़े यंग और प्रिटी थिले बोली ओके इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट his grandmother was once young and pretty because he had once old and wrinkled for 20 years that he had known her तो 20 वर्ष है राइटर तांको ग्रांडमा को जानिकी आसुचंती जे सब बेले एवरग्रीन होकि ही रही तो सेटा को से भावुंट कि केमिति माने एते एवरग्रीन होकि अच्छी आउ माने चेंजेस किसी ना बोली से बिलीव करि पारना ओके हाउ डिड द ग्रांड मदर एपियर इन हिज पोर्ट्रेट ग्रांडफादर किपरि देखा जाउचंती तांकर पोर्ट्रेट रे ओके द ग्रांडफादर एपियर एट लीस्ट 100 years old in his portrait ताको ग्रांडफादर जी की बहुत बुढ़ा 100 years रो ओल्ड भलिया देखा जाउचंती he wore a big turban and loose fitting cloth his long white beard covered the best part of his chest तो तांको एते गोटे पगड़ी पिंधिथिले आ लूज फिटिंग ड्रेस पिंधिथिले आ तांको व्हाइट बियर्ड जो दाढ़ी पूरा पेट को पड़ुला जोटा कि तांकर बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट कवर हो जाउतिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन डिड लुकिंग हिज पोर्ट्रेट तो तांके किपरि देखा जाउथिले किए जो ग्रांडफादर इन हिज पोर्ट्रेट हिज ग्रांडफादर डिड नॉट लुक ए सॉर्ट ऑफ ए पर्सन who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो से ग्रांडफादर जे कि खाली ओल्ड खाली ग्रांडफादर भाया देखा जाउनथिले से बहुत बुढ़ा लागुथिले ओके जमिति कि लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रांडचिल्ड्रेन ताकर जमिति बहुत गुडा नाती नातुणी थिला भाया देखा जाउथिले ओके हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे हिज ग्रांडमदर एंड इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओके ग्रांडफादर और ग्रांडमदर रो पोर्ट्रेट भल से शिखिकी जाई था ओके the author's grandmother had always been short fat and slightly bent ग्रांडमदर किपरि देखा जाउतिले जे से शॉर्ट हाइटेड थिले फैट थिले आउ बेंट हेकी थिले her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere तांको फेस रो जोटा कि wrinkles जो दाग गुडाको चारियाडे क्रॉस हेकी थिला okay she was so terribly old that according to the author she could not have grown older and stayed at the same for 20 years तो ग्रांड मदर माने जेमिति थिले ना से सेम रे 20 years हैला अछंती बोले ग्रांड जो राइटर भाबुथिले तांको देखि आसुथिले ओके व्हाई डज ही से द थॉट वाज ऑलवेज रिवोल्टिंग से काहे के कहउथिले जे से थॉट तांको सब बळे रिवोल्टिंग करथिला रिवोल्टिंग मींस कोन जोटा कि माने बिलीव करि पार नथिले से ओके द ऑथर सेज दैट द थॉट ऑफ द ग्रैंडफादर हैविंग बीन यंग एंड प्रीटी was almost revolting because he had always seen in the grandmother terribly old तो से ग्रांडमदर आ ग्रांडफादर को कंपैरिजन देखिला बेलू जड़े बहुत प्रीटी देखा जाउचंती आ जड़े बहुत ओल्ड देखा जाउचंती से कंपेयर कला बेलू तांको लागुची कि जे ग्रांड मदर जी की पूरा यंग प्रीटी अच्छी किंतु ग्रांडफादर बहुत टेरिबली ओल्ड अच्छी बोली से कहते ओके तो द ग्रांडमदर हैड ए डिवाइन ब्यूटी हाउ डज द ऑथर ब्रिंग इट दिस आउट तो ग्रांडमदर को गोटे डिवाइन ब्यूटी थिला तो से किपरि राइटर एटा को जणैछंती द ऑथर ब्रिंग्स दिस आउट द कंपेयरिंग हिज ग्रांडमदर टू द विंटर लैंडस्केप in the mountain which he considered as the expanse of a pure white scenery breathing peace and contentment माने ताको ग्रांड मदर को जे कि विंटर लैंडस्केप साथ कंपेयर करथिले जोटा कि बहुत पीसफुल आउ देखिले गोटे साटिस्फाई कामनेस रो प्रतीक बोली जना पड़थिला ओके एतिक थिला हमर यूनिट 1 रो यूनिट 2 रो क्वेश्चन गुडा को कोन अछि देखो व्हाट वाज द ग्रांडमदर रूटीन इन हिज विलेज तो ग्रांडमदर है कि राइटर विलेज रे रहउतिले ताकर डेली रूटीन कोन थिला द ग्रांडमदर रूटीन इन द विलेज वाज वॉकिंग राइटर अप टू द मॉर्निंग waking
the writer up in the morning and getting him ready for schools. She would then accompany him to school, stay there in the temple attached to the school, and walk back home after school was over. तो ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା ଯିଏକି ଡେଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଦେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠିକୁ, ସ୍କୁଲକୁ। କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଆଟାଚ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସାଥିରେ। ଓକେ, how did the grandmother take care of the writer during his childhood? Was she good companion of the writer in his village? तो से दुई जण भल सांग थिले कि? In the writer's childhood, the grandmother would wake him up in the morning and bath and dress him and offer him chapatis with the butter and sugar for the breakfast. And she even went to school with him, stayed there till school was over, and came back home with him, and she was a constant companion of the writer in the village. तो ग्रांड मदर ହେଇକି ରାଇଟର ଯିଏକି ପୁରା ଦିନ ସାରା ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ ସକାଳ ଟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ବି ମନ୍ଦିର ସାଥିରେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବି ଆସୁଥିଲେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଲେସନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ? ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଲେସନ୍ ଶିଖାଉଥିଲେ? ଦ ରାଇଟର ଲର୍ନ ଦ ଆଲଫାବେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇଟିଂ ଦ ପ୍ରେୟର ଇନ୍ ଦ କରସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଷ୍ଟ। तो आल्फाबेट शिखुले आ प्रेयर गुड़ाक शिखुले काठारू ए जो प्रिस्ट थारू। हाउ डिड द ग्रांड मदर स्पेंड हर टाइम एट द टेम्पल? टेम्पल से किपर टाइम स्पेंड करथिले? द ग्रांड मदर स्पेंड हर टाइम इन द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स माने कौन, जोटा कि हॉली बुक्स रीडिंग करके से टाइम स्पेंड करुथिले। किए? ग्रांड मदर। Was the grandmother religious person? How? grandmother religious person ଲାଗୁଥିଲେ ଯଦି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ କିପରି? The grandmother was intensely religious. She regularly said that her morning prayer. grandmother ଯେହେତୁ ଡେଲି ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଡେଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଇଭେନ୍ when she went to the school with her writer, she sat inside the temple and attached to the school and kept reading the scriptures. ଏବେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ବି କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2ର। ଏବେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଏକମ୍ପାନୀ ଦ ରାଇଟର ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସିଟି? ତ ଯେତେବେଳେ ସିଟିକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ? କିଏ ରାଇଟର ହେଇକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। Since the writer went to the school in the city in a bus, the grandmother could not longer accompany him. ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋଟର ବସ୍ରେ ଗଲେ ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଇଏ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। Why could not the grandmother help the writer with his lesson at the city school? ତ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ କାହିଁକି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନଥିଲେ? କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। The grandmother could not help the writer with his lesson at the city school because the lesson considered of the English word and little things of Western science and learning and law of gravity, Archimedes' principle, and the world being round, etc., which she could not familiar. तो ग्रांड मदर को ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रे जहाँ जहाँ पढ़ाऊला वेस्टर्न साइंस देन लॉ ऑफ ग्राविटी एगुड़ा जाना नथिला, सेथिपाई से तांको हेल्प करि पारु नथिले। ओके, so what did the lesson at the English school distress the grandmother? grandmother को पाठटा बहुत डिस्टर्ब करतुला। The lesson at the school distressed her because she did not believe in the things they taught at the English school and because he was not teaching the God and scriptures there. तो grandmother को मत अनुसार से जो स्कूल रे खाली वेस्टर्न साइंस लॉ ऑफ ग्राविटी इंग्लिश एगुड़ाक पढ़ाऊला किंतु स्क्रिप्चर्स भगवान को विषय पढ़ा होउनथिला, सेथिपाई से बहुत डिस्टर्ब हो जाउथिले। ओके, why was the grandmother disturbed about music lesson at the English school? एटा बहुत इंपोर्टेंट। ओके, तो म्यूजिक लेसन को लेकिन से कहीं बहुत डिस्टर्ब फील करुथिले। She was disturbed about music lesson at the English school because she thought music is the lewd association and it was not a monopoly of harlots and beggars and not meant for the gentle folk. तो से कौन भावुले जे ये जो म्यूजिक लेसनटा ओनली फॉर बेगर्स एंड हार्लट मीन्स जोटा कि आम जो प्रस्टिट्यूट्स वुमेन्स गुड़ा को कहवा। ओके, आउ एटा जेंटल माने कॉमन लोक मान ये जो म्यूजिक लेसन नाही बोली ग्रांड मा भावुले। ओके, देन व्हाट वर द 3 ways in the
in which the grandmother spent her days when the author went to university. University गला परे से किपरि ताको डे गुड़ाक स्पेंड करुथिले. When the author went to the university, the grandmother spent her days by sitting on her spinning the wheels and sunrise to sunset. She also recited prayer and feed sparrows in the afternoon. तो से तीन टा काम करथिले एटा को मन रखथिबो एग्जाम रे आसीबो. ओके तो से कोन करथिले स्पाइनिंग द व्हील्स करथिले देन आ कोन करथिले रिसाइटिंग प्रेयर करथिले आ स्पारो मानको खाद्य दउथिले. ओके ए तीन टा काम से खरा बेले करुथिले. ओके क्वेश्चन कोन हेची देखो. What was the happiest time of the day of grandmother? Grandmother को सबठारो happiest moment कोटा थिला. The happiest time for the grandmother was when he relaxed for a while to feed the sparrows. तो स्पारो मानको जेतेबेले खाद्य दउथिले ना सेटा थिला तांकर happiest hours. Then she sat in the veranda breaking the beads into little bites, and hundreds of little birds collected round her foot. Sorry, foot, not it is food. And they also perched on her legs and soldiers and even sat on her head. तो से जो बर्ड्स गुड़ाक से चारिआडे बसी जाउथिले तांको गोड़रे तांको सोल्जर्स रे देन तांको लेग्स रे. ओके तो जेतेबेले ये स्पारो को खाद्य दउथिले. ओके नेक्स्ट. How did the grandmother accept her seclusion? तांको seclusion को से किपरि accept करथिले. She accepted her seclusion with the resignation. She accepted the unpleasant fact or situation because he realized that she could not change it. There was no grief or expression, only profound resignation. तो से grandmother जे कि जानी थिले जे मु किछि चेंज कर परिबिनी जा हबार अछि हबो. तो से निजको साइलेंस रही निज काम निजे करिबारे लागिले. ओके हाउ डिड द ग्रांडमदर सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन रे से छाड़ला बेलू तांकर किपरि एक्सप्रेशन थिला. द ग्रांडमदर वाज नॉट ए सेंटिमेंटल अबाउट हर ग्रांडसन्स गोइंग अब्रॉड. शी केम टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन एंड डिड नॉट शो एनी इमोशन. तो ग्रांडमदर को से टोटल इमोशन को फेस नथिला. At the time, her lips moved in prayer, her mind was lost in the prayer, and her fingers were telling the beads of the rosary. She silently kissed his forehead and bade him goodbye. तो से जो ग्रांड मदर को टोटल सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन नथिला से खाली जस्ट तांको फॉरवर्ड रे किस कर देले आ तांको एब्रोड को पठै देले. हाउ डिड द ग्रांड मदर मेट द ऑथर व्हेन ही केम बैक होम फ्रॉम एब्रोड. तो एब्रोड रो होम को आसिला परे से किपरि पुणी एक्सेप्ट करथिले. When the author came back home from abroad, his grandmother met him at the station. While she clapped him in his arm, she kept reciting her prayer. तो grandmother जेतबेले रिटर्न कले राइटर तो से टाइम रे भी तांकर प्रेयर ही चलथिला आ अदर किछि चली नथिला. ओके What were the happiest moment on the first day of author arrival? Author arrival परे तांकर कोन थिला first things. On the first day of author arrival from abroad, after 5 years, her happiest moments were with the sparrows whom she loved so dearly and fed them the fibulous revolt. So, your work is what is the meaning of fibulous revolt? Comment on my comment box. Okay. तो से राइटर बाहर आसिला परे भी ये स्पेंड करते से जो स्पारो मान साथी रे ही. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द ग्रांडमदर सेलिब्रेट द author return in the village in the evening and does the behavior owed to you. तो तांको behavior changes हेतिला कि the grandmother celebrated the author return from abroad with enthusiasm and gaiety, and she collected some women of the neighborhood, got old drum and starting singing. For several hours she stomped the skin and old drums and sang a homecoming warriors, and the whole family had to persuade her to stop but ever overstraining. तो से जो ग्रांड मदर जे कि संध्या समय रे राइटर आसिला परे किछिटा चेंज हैला. कौन से चेंज हैला जे से प्रेयर बंद कर देतिले आउ ताको नेइबर रो लोक मान को डाकी कि से ड्रम धरि कि ड्रम बजेले सेटा को प्रोटेस्ट करे ताको फैमिली मेंबर्स किंतु सेटा को से स्टॉप कर पारले नथिले. ओके हाउ डिड द grandmother pass away. ताकि किपरि पास अवे ही जाइथिले. The grandmother passed away by laying peacefully in the bed, praying and telling the beads. In the end, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. A peaceful paleness spread on her face on her death. ताको डेथ हैला परे
ତାଙ୍କ ରଜେରୀ ଯାହା ଜପମାଳି ଧରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ how did the sparrow react when the author grandmother died? ତ author grandmother died ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କିପରି react କରିଥିଲେ? ଓକେ, when the author grandmother passed away the sparrow reacted in a strange manner। ତ ସ୍ପାରୋ ମାନଙ୍କର ବି କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା। thousands of them sat scattered on the floor and without chirping, when the little crumbs of the bread thrown to them they took no notice of the bread। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପାରୋ ମାନେ ବି ବହୁତ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇଲେ ହିଁ ନାହିଁ, ନୋଟିସ୍ ହିଁ କଲେନି। when the grandmother's crops with carried off they flew away quietly। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ ସେଠାରୁ। ଓକେ, the last question for today, next morning the sweeper swept the bread crumb into the dustbin। what does this expression line mean? तो ये जो लाइन रो मीनिंग टा कौन? This shows that the line implies that the grandmother's death had a profound influence on the sparrow। the death of their beloved person came as the shock to them, and which they mourned for the death and flew away quietly without eating the breadcrumbs। this is why the breadcrumbs lying on the ground and were swept of the sweeper into the dustbin। तो ये जो स्पारस गुड़ाक किसी भी नोटिस कलेनि, से माने देखिले तांकर जे कि फेवरेट पर्सन मरी जाउछंती, तो साइलेंस रे से माने उड़ीकी पळेले। ओके, तापर डस्टबिन रे स्वीपर आसिक सेटाको फोपाड़ी देला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द important question of unit 1 2 3 4। I hope you understand this one। So do like, share and subscribe and keep supporting and keep loving। Thank you for watching। if you need any topic you can comment on my comment box, I will definitely provide you।